I sent out 15 to 20, like around 16 cold emails, and he was the one who replied to me. How was that interview with Ankur Warikoo like? The interview was very intimidating in a way कि there was no judgment at all कि अगर उन्होंने कुछ पूछा, अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है. Has it influenced your mindset or perspective in any way? When you edit, आपको तो काफी bloopers वगैरह दिखते होंगे. So any memorable one you would like to share? How can a person start with video editing from scratch? Like I don't feel insecure about anything when it comes to career. How can someone be creative as an editor? Then I have no option but to just compromise the quality. What are some mistake जो नए video editors बनते हैं वो बनाते हैं? There is a difference between knowing how to edit a video and being a video editor. Hello everyone, welcome back to another exciting episode of Tea with Aditya. Today we have a guest जो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं लेकिन उनका काम सबसे सामने चमकता है. Joining us is Aditya Vora, an incredibly talented video editor who has crafted content that millions of people consume daily. Hello Aditya Bhaiya, how are you? Good, how are you? Hi. So good. So first of all, could you please give us a brief introduction for the जी audience? जी 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 बिल्कुल. So hello everyone, I am Aditya. मैं पिछले पाँच छः साल से एडिटिंग कर रहा हूँ. I started as so I did a very like brief diploma in visual effects. Turned out that I don't like that. तो मैंने उसमें से थोड़ा सा सीखा था वीडियो एडिटिंग एंड उसी को मैं सोचा कि थोड़ा सा ब्रश अप करता हूँ स्किल्स. So I started freelancing. I started freelancing and I did freelancing for like 1 or 2 years. Then I did an internship in video editing. Then I kept brushing up my skills and uske baad I slowly uh, got better at it. Then I applied, then I cold emailed Ankur Warikoo, and this happened 4 years ago. And that's when he liked my work. I started working with him, and till date I work with him. उस चीज़ के अलावा भी I work with a lot of other clients. Till date, I have worked with 25 to like 30 plus clients. And I'm very fortunate enough to work with a lot of different clients and put my brains into it. So, that has been a nice journey all this way. So how did you crack your first client freelancing करते हुए? पहले जब मैंने शुरू किया था वीडियो एडिटिंग, तो मैं बस खुद के वीडियोज़ एडिट करता था कि कुछ शूट कर लिया और उसको लेके एडिट कर लिया. एंड देन आई जस्ट सॉ अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम बाय समवन एंड मैंने बस अप्लाई किया. ही वाज़ अ वेडिंग फिल्म फोटोग्राफर, सो ही वांटेड वीडियो एडिटर एंड आई जस्ट अप्लाइड एंड ही वाज़ लाइक कि ठीक है, आ जाओ. सो I applied to a lot of places. Like even before working with Ankur, I sent out 15 to 20, like around 16 cold emails, and he was the one who replied to me. So yeah, that's how I got him. How was that interview with Ankur Warikoo like? The interview was very intimidating in a way कि मैं nervous था, of course, because I know. So उस time पे although he had like around 30-40,000 followers on Instagram, like 10-15,000 subscribers on YouTube, but I knew that yeah, he is a big entrepreneur. So even at that time, I was very scared and I was very young as well. So, but he actually uh, talked in a way कि उन्होंने बहुत comfortable कराया मुझे बात करते-करते. उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे, आई आंसर देम अच्छे से. देयर वाज़ नो जजमेंट एट ऑल कि अगर उन्होंने कुछ पूछा, अगर मैं आंसर नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं, बात करते हैं. तो ऑल ऑफ दैट इट वाज़ वेरी कंफर्टेबल ज़ोन. तो आफ्टर 5 to 6 minutes, आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चलो ओके, थिंग्स आर ओके. ही इज़ नॉट दैट इंटिमिडेटिंग, बस स्टार्टिंग में लगता है. तो डरने की बात नहीं है.
So then I started opening up. So yeah, that's the interview. So, as you work with Ankur Warikoo, has it influenced your mindset or perspective in any way? 100%. A lot of my decisions are because of the things that I learned. Because जब पहली book launch हुई थी, Do Epic Shit, Hmm. I did not have to read it because everything was I knew everything of it. क्योंकि me being an editor, मैंने तो हर एक content piece देखा हुआ है. तो उस उसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बेटर हो गया. हाउ आई सी अबाउट हाउ डू आई प्लान माय करियर आउट, हाउ डू आई टेक डिसीजंस, किन चीज़ों पे टाइम ज़्यादा देना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं देना चाहिए. ये सारी चीज़ें मुझे फॉर्च्यूनेटली काफ़ी कम एज में सीखने मिली. अ, बट वही है कि अगर मैं एडिट नहीं करता तो लाइक इफ आई डिडंट एडिट फॉर अंकुर तो it would be difficult for me to learn so much, but I'm glad that I did. So yeah, a lot of my decisions on day-to-day life and about how to scale up in my own career. Uh, जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उसमें से कितने पैसे कहाँ जाने हैं, क्या करना है, कितना मैं एक्चुअली स्पेंड करना चाहता हूँ. All of those things are influenced because of the things that I learned from Ankur. What is a typical day like editing for a big creator? Earlier, I used to feel like there is a very big responsibility on my head कि मैं बहुत बड़े क्रिएटर के साथ काम कर रहा हूँ. But over time, I was like कि just do the best and that's it. Like वो प्रेशर या वो दिमाग में नहीं लाना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे. इन चीज़ों में इस एडिट में ऐसा ही टाइप का करना चाहिए. नहीं, सो मेरा डे टू डे बस उसी में जाता है कि हाउ डू आई मेक दिस one of my favorite content piece. So uh, the way that I think about before editing anything is this कि बस जब मैं ये खत्म करूँ काम तो मैं satisfied रहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि ये कंटेंट पीस इसको मैंने इस वे से एडिट किया है कि ये चल जाएगा. So that's how I think about all of these things. ऑफ कोर्स मैं अगले दिन या फिर अगले 1 महीने बाद वापस वो चीज़ देखता हूँ, वो कंटेंट पीसेस देखता हूँ जो मैंने एडिट किया है, वो उतने पसंद नहीं आते हैं बिकॉज़ आई जस्ट फील लाइक कि आई डोंट नो व्हाट आई वाज़ थिंकिंग एट दैट टाइम, बट इट्स अ कांस्टेंट अपस्किलिंग इन दैट वे. वो तो होता है लाइक आई आल्सो सी माय ओल्ड वीडियोस एंड आई एम लाइक क्या कचरा बनाया है ये. Exactly. That happens with a lot of creative work, working या professionals. या Mm, yeah. व्हेन यू एडिट आपको तो काफी ब्लूपर्स वगैरह दिखते होंगे. सो एनी Uh, मेमोरेबल वन यू वुड लाइक टू शेयर जिस पे uh, कंट्रोवर्सी ना हो, विवाद नहीं होना चाहिए. नहीं, नहीं, विवाद वाला चीज़ नहीं है. But one blooper I remember is I was editing this short, and what Ankur, so he is in a studio and एक घर में वो स्टूडियो बना हुआ है. So when he हम्म. was talking, तो पहले तो घर की घंटी बजी. तो he stopped and then he started again. फिर वापस घंटी बज गई. So he's like, "अरे यार!" And then again he stopped, he started again, and then again and continued. So I was like, गुस्सा बड़ा आता होगा, but then नहीं, he was calm in it. जानबूझ हाँ, के तंग कर रहा था कोई. ऐसा लग रहा था, but पता नहीं. So हाँ, that happened. That was a big reason. That was one of the bloopers that I find it very funny. Yeah. How can a person start with video editing from scratch and what are some resources for the same? Okay. Uh, देखो वीडियो एडिटिंग शुरू करने का रीज़न एक तो सही होना चाहिए कि if you like it, then start. But if you are in it for the money, then you need to be conventional. So you need to start conventionally, like properly एक editing tool सीखो. uh, फिर सारे जो भी सारे नहीं बट मेजरली जो मास्टर क्लास होता है वो टूल सीखने का. जैसे कि अगर मैं प्रीमियर प्रो पकड़ूं तो प्रीमियर प्रो पहले तो इंस्टॉल करो, फिर वो सीखो और फिर सीखो कि वीडियो एडिटिंग एग्जैक्टली क्या होता है. तो एक जो बेसिक
फाउंडेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है एंड दैट फाउंडेशन कम्स फ्रॉम कि तुम जब एडिटिंग करने बैठते हो, तो यू हैव टू एनविज़न फर्स्ट कि क्या चीज़ क्या करना है मुझे इस चीज़ का, क्या कैसे दिखना चाहिए। सो दैट हम्म, रीज़न नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग। तो व्हेन यू इफ अगर कोई भी पर्सन को एडिटिंग सीखनी हो या स्टार्ट करनी हो, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू record some videos और get some videos from somewhere जैसे कि अभी वेरी रिसेंटली बहुत सारी जगह पर ऐसे होता है कि कोई पॉडकास्ट बनाया है, तो पॉडकास्ट में से जो क्लिप तुम्हें पसंद आ रही है, उसको एडिट करो, उसको निकालो, उसके गैप्स सारे हटाओ, जो साइलेंसेस है, उसको हम्म, प्रॉपरली एक नॉर्मल वीडियो बनाओ। उसके ऊपर जो ग्राफ़िक्स है, बी-रोल्स होते हैं, फिर टेक्स्ट होता है, फिर सबटाइटल्स हम्म, होते हैं, म्यूज़िक होता है, साउंड इफ़ेक्ट्स होता है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी आप यूट्यूब वीडियो कोई भी यूट्यूब वीडियो से सीख जाओगे कि हाउ टू एडिट, ये बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली सीख जाओगे। बट द one thing that you'll learn is by doing it again and again and again. तो जब तुम 4, 5, 6 महीना डालोगे, that's when you'll actually uh, learn। जब कुछ नया वीडियो आएगा किसी क्लाइंट से या किसी भी पर्सन से, फ्रेंड से या खुद बनाओगे, तो तब तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो ये नॉर्मल कट्स कैसे लगाते हैं, कौन-सा म्यूज़िक डाल सकते हैं, कैसे साउंड इफेक्ट्स, कौन से टाइप के ग्राफ़िक्स दिखा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें। सो द वही ज व्हेन एनीवन इज़ स्टार्टिंग फर्स्ट, द बेस्ट थिंग इज़ टू लर्न द वेरी बेसिक्स ऑफ इट and then try to implement it in the edits that you make। चाहे वो कोई भी वीडियो हो, पॉडकास्ट से निकाल सकते हो, खुद शूट कर सकते हो, कोई यूट्यूब वीडियो से निकाल सकते हो। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तुम खुद एक मूवी का ट्रेलर बना दो, दैट इज़ आल्सो अ गुड एक्सरसाइज। सो या दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स दैट you should do first। and some of the resources to do the same. Resources in a way, so for B-rolls and all आप पूछ रहे हो? Yeah, yeah. Yeah, okay. So for B-rolls, the best and free is YouTube। कि तुम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब से। मीम हो, म्यूज़िक हो, साउंड इफ़ेक्ट हो, कोई मूवी का रेफ़रेंस डाला है तो उसका हो, तो आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट फॉर प्रीमियम बी-रोल्स और प्रीमियम म्यूज़िक, आई वुड से एनवाटो इज़ अ वेरी गुड वन। देन देयर इज़ एपिडेमिक फॉर म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स, दैट इज़ अ वेरी गुड वन। तो ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा आई ऑल्सो यूज़ स्टोरी ब्लॉक्स फॉर बी-रोल्स। स्टोरी ब्लॉक्स पे बहुत सारे इंडियन बेस्ड बी-रोल्स हैं, जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं। तो ये पेड इंडियन है। या सो इंडियन दीज़ आर बेस्ड पेड मिलता बट नहीं है या ना ज़्यादा स्टॉक इमेजेस। एग्ज़ैक्टली, वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोज़ इसलिए डालते हैं ताकि जो भी हम बोल रहे हैं, वो रेज़ोनेट करे सामने वाला बंदा। तो जो भी अगर मैं बोल भी रहा हूँ ना कि मैं अभी फ़ोन पे मैं एक दिन फ़ोन पे चैट कर रहा था किसी के साथ, तो ये चीज़ विज़ुअली दिखाना पड़ेगा कि कोई तो एक पर्सन फ़ोन पे चैट कर रहा है, तो ये चीज़ तुम स्टॉक वीडियोज़ से निकाल सकते हो। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और मैं कोई ऐसा रैंडम पर्सन अमेरिकन दिखा दूँ, तो वो कनेक्ट होना थोड़ा-सा हुँ, डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए इंडियन बेस थोड़ा-सा कनेक्ट करवाने के लिए बहुत अ बेटर रहता है। तो या दैट इज़ फाइन। आई हैव सीन कि एआई भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। व्हेन आई हुँ, हुँ। वाज़ एडिटिंग अ पॉडकास्ट मैंने कोई तो वीडियो देखा था। उसमें था कि आप बस वीडियो डालो एंड पूरा प्रोसेस वगैरह होकर, बी-रोल्स वगैरह हुँ। डलकर, साउंड इफेक्ट्स हुँ, वगैरह हुँ। डलकर आपको पूरा पॉडकास्ट मिल जाएगा लास्ट में। सो व्हाट आर राइट। योर व्यूज़ ऑन एआई? क्या करेगा एआई? लाइक इट विल इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी या फिर दिक्कत वाली चीज़ है थोड़ी? नहीं, नहीं, तो जब पहली बार भी अनाउंस हुआ था एआई, मुझे बिल्कुल थ्रेट फ़ील नहीं हुआ था। आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स अ वेरी गुड टूल। अ, एआई इज़ अगर लाइक आई डोंट फील इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू करियर। तो लाइक अगर मेरे से कोई बेटर एडिटर है या मेरे से बेटर लाइक मैं जो कर रहा हूँ उससे बेटर एक टूल है, तो आई वुड से कि ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो टू लर्न हाउ टू यूज़ एआई इज़ अ स्किल इन इटसेल्फ।
एंड अगर तुम वो एआई अगर अपने काम में अगर डाल दो, तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगा, या मोर देन दैट 10x भी हो सकता है। तो इट्स ऑन यू कि हाउ डू यू यूज इट। एंड वही बात है कि राइट नाउ द एआई इज नॉट सो स्ट्रांग कि तुम वीडियो डालो एंड सब कुछ करके आ जाए, एंड एग्जैक्टली वो करके आ जाए जो तुम्हें चाहिए। नहीं, थोड़े बहुत माइन्यूट इधर उधर के चेंजेस करने पड़ेंगे। तो uh, जैसे कि आई यूज एआई, इट्स नॉट एन एआई बट इट्स अ टूल की ऑटोपॉड करके है, विच एक्चुअली या उसी की बात कर रही हूँ मैं, आई थिंक सो। या सो आई यूज दैट, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट देन मुझे पता है ना कि Uh, तो बेसिकली ऑटोपॉड, इफ व्यूअर्स डोंट नो व्हाट दैट इज, कि एक तुम पूरा पॉडकास्ट रॉ वीडियो डाल दो एंड ऑटोमेटिकली सारे कट्स लग जाते हैं, और कैमरा स्विच हो जाता है इजीली। तो दैट इज ऑटोपॉड। बट मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन से मोमेंट पे कोई पर्सन कोई जोक बोल रहा है, सामने वाला हंस रहा है, तो दोनों भी कैमरा एंगल्स दिखाने जरूरी है। ऐसा नहीं हम्म। होगा कि पहले एक बंदे का दिखेगा फिर दूसरे बंदे का दिखेगा, नहीं। व्हेन बोथ ऑफ दीज आर टॉकिंग तो दोनों के दिखेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी एज ह्यूमंस नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो वो अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है। तो देयर इज देयर इज ऑलमोस्ट नेवर अ थ्रेट ऑफ एआई व्हेन यू आर एक्चुअली गुड एट द वर्क दैट यू डू। अभी मैं बहुत ज्यादा इंटेंसली यूज करता हूँ एआई टू समराइज। जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स के मैं एआई ऐसे यूज करता हूँ कि मैं जो मेरे पास रॉ वीडियो है उसको मैं समराइज कराता हूँ, कि मुझे बता दो कि पूरे शॉर्ट में क्या बोला है, एंड देन मैं खुद विजुअलाइज करता हूँ कि इसको मैं ऐसे 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 दिखाऊंगा एक एक करके, एंड देन दैट इज हाउ आई देन गेट स्टार्टेड विद द वर्क। तो मुझे पहले से ही मेरे दिमाग में स्टोरी बोर्ड बना हुआ है। अगर मैं एक्चुअली वीडियो एडिट करता रहूँगा तो कभी आवाज़ आ रहा है, कभी वीडियो देख रहा हूँ मैं, तो 3-4 सेंसेस एक साथ काम कर रही है, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा कि अरे! इसको कैसे करूँ, कैसे करूँ? बट एक सामने ग्राफ बना हुआ है, एग्ज़ैक्टली पूरा डेटा रखा हुआ है कि इस वीडियो में ये सारा कंटेंट है। तो जब मैं देखता हूँ, तो मुझे समझता है कि अच्छा इसमें मैं ये करना चाहता हूँ, एंड देन आई डू इट। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ दैट। आई यूज़ अ लॉट ऑफ एआई इमेजेस। उस एआई इमेज जनरेट करके, फॉर एग्जांपल अगर अंकुर के लिए मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो एआई इमेज में जनरेट करूँगा, कोई भी इंडियन एआई इमेज जनरेट करूँगा एंड अंकुर का फेस स्वैप कर दूँगा, एंड देन इट विल लुक लाइक ही ही इज़ एक्चुअली द पर्सन इन इट। तो दैट इज़ आल्सो व्हाट आई डू। तो इट हेल्प्स मी मेक माय ओन बी रोल्स। तो उसी इमेज को मैं runway.ml में डाल के एक वीडियो कन्वर्ट कर दूँगा, एंड देन आई यूज़ इट। तो all of these are just tools to make your skill, your art better. So yeah, that's what I think. हाउ कैन समवन बी क्रिएटिव एज एन एडिटर? तो सबका यार क्रिएटिविटी बहुत डिफरेंट है टू ट्रिगर द क्रिएटिविटी। किसी किसी को अभी बैठ के 3 घंटे डाल दूं और फिर काम करूं तो दैट इज हेल्पफुल। किसी किसी को 1 घंटा काम, 1 घंटा ब्रेक, 1 घंटा काम, दैट इज हेल्पफुल। बट आई फील generally what everyone should practice is looking at others work कि एंड देन एनालाइज इट। कि अगर मैं तो एज यू ऑल्सो नो कि आई स्क्रॉल अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम फीड, कि मैं बहुत सारे रील्स देखता हूँ, मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ, चाहे वो मूवीज हो, सीरीज हो, सोशल मीडिया हो, पॉप कल्चर हो, कुछ भी हो। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड नॉट जस्ट दैट, आई लव आर्ट इन इटसेल्फ एज वेल। कि पिंटरेस्ट भी स्क्रॉल कर लिया या कुछ ऐसी ऐसी चीजें, तो आई लाइक दैट। तो अब उससे होता यह है कि आई creativity is basically क्यूरेशन ऑफ आर्ट। कि अगर मैंने यहाँ पर 2 दिन पहले कुछ ऐसी चीज देख ली और फिर 3 दिन पहले कुछ और देख लिया, तो ये दोनों को मिक्स करके मैं अपने स्टाइल से कुछ बनाऊंगा, एंड दैट बिकम्स माय ओन क्रिएटिविटी। तो इट्स नेवर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर ओन, लाइक इट्स नेवर 100% ओरिजिनल। तो कुछ चीजें होती है जो हमने पहले सीखी हुई है, सबकॉन्शियस में रखा हुआ होता है, एंड देन उसको हम निकालते हैं। सो द बेस्ट थिंग दैट आई फील टू हैव अ गुड क्रिएटिव माइंड इज टू स्टडी अदर्स वर्क, नॉट बी क्रिटिकल अबाउट इट, बट जस्ट स्टडी, अंडरस्टैंड व्हाई दे डू व्हाट दे डू। इवन इफ कुछ माइनर दिक्कतें होगी डिजाइन में, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि वो
डिजाइन वाइज वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी समवन मेड इट, तो व्हाट डिड दे थिंक अबाउट इट? सो ये सारी चीजें जस्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वंस यू लर्न दैट स्किल हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, देन आपका क्रिएटिविटी धीरे धीरे बूस्ट हो जाएगा। व्हेन यू आर एडिटिंग अंडर डेडलाइंस जैसे हम्म। होती होंगी, सो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो स्पीड कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर यू हैव टू परफेक्ट इतना एडिट नहीं हो सकता. व्हाट डू यू कॉम्प्रोमाइज एंड व्हाट इज एडवाइजेबल? कॉम्प्रोमाइज यार देखो, आई आई हेट टू डू दिस, बट जब भी मैं डेडलाइन के क्रंच में होता हूँ, तो आई प्रेफर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी एट ऑल। जब अगर समझो ऐसा हो कि अचानक से काम आ गया एंड दे नीड इट इन 1 आवर, देन आई हैव नो ऑप्शन बट टू जस्ट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी एंड डू व्हाट आई कैन इन दैट 1 आवर। पर जब मेरे पास टाइम है और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उनसे बोलूँ कि मैं आज था मेरा डेडलाइन, पर मैं कल सुबह तक देता हूँ, बिकॉज इट्स टेकिंग मोर टाइम देन यूजुअल। तो आई प्रेफर आस्किंग द क्लाइंट इफ दैट इज ओके और नॉट, but I don't like to compromise on quality. I am okay to compromise on my sleep schedule or my other things, but not the quality, because बाद में जाके मुझे पता है कि मुझे रिग्रेट होगा अगर मैंने हाफ हार्टेड काम किया तो। सो या। व्हाट आर सम मिस्टेक जो नए वीडियो एडिटर्स बनते हैं वो बनाते हैं, एंड हाउ कैन यू रेक्टिफाई इट? So what I've seen is there is very less transparency with the client of editor, कि अगर एक तो पहले तो दिक्कत ये आती है कि एडिटर को काम मिलना ही डिफिकल्ट होता है। अगर जब मिल जाता है तो दे गेट एक्साइटेड एंड दे से यस टू एवरीथिंग। तो अगर क्लाइंट ने काम दिया है एडिटर को, तो एडिटर नीड्स टू आस्क क्वेश्चंस कि तुम्हें किस टाइप से चाहिए, क्या चाहिए, रेफरेंस क्या होगा, एंड देन व्हेन दे गेट द वर्क एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो अगर कोई भी बीच में डिफिकल्टी आ रही है, सो दे कैन आस्क, और एल्स दे कैन पुट देयर ओन क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंड दैट एंड देन डू इट। पर देयर इज अ वेरी लेस ट्रांसपेरेंसी ऑन, अगर कोई डिले है, अगर समझो आज नहीं हो पा रहा है, कल होगा, तो दे नीड टू टॉक दैट। बट देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एडिटर्स just ghost the client even after working on it, because उनकी तरफ से कोई डिले हो रहा था या कोई दिक्कत आ रही थी या कुछ भी था। तो that happens a lot. A transparency is something that they need to have. तो आपने जैसे शादी के फिल्म्स भी एडिट करे थे, सो Mhm. एनी सिग्निफिकेंट लर्निंग दैट यू गॉट फ्रॉम देयर? Uh, so early days में किए थे, if you ask me I wouldn't do it right now. um, उस टाइम पे all that I wanted was to edit, and that's it. So I feel मैं एडिटिंग में उतना ज़्यादा नहीं सीखा, बट व्हाट आई लर्न्ड इन दोज़ फर्स्ट few years when I was editing वेडिंग फिल्म्स एडिट कर रहा था तब, was just understand the tool, कि कौन-सा इफ़ेक्ट कहाँ पर है, क्या चीज़ करने से क्या होता है, कौन-सा शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए। तो मैं जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता था विद द टूल, लाइक आई गॉट मैरिड टू द टूल। लाइक प्रीमियर प्रो जैसे था, मैं तब से लेकर अब तक वही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि फाइनल कट पे स्विच करो, डाविंची पे स्विच करो। बट देन आई जस्ट लर्न्ड दैट टूल सो वेल दैट आई फील कि सबसे ज़्यादा मेरा एफिशिएंसी उसी की वजह से आता है, बिकॉज़ आई नो द टूल वेरी वेल। आई नो कि क्या चीज़ क्या काम करती है। सो आई फील इनिशियल डेज़ में मुझे अ, मेरा सबसे बड़ा लर्निंग वही था, टू नो द टूल इन एंड आउट। इज़न्ट दैट हार्मफुल एज़ वेल कि अगर कल को प्रीमियर प्रो बंद हो जाए फिर क्या होएगा? नहीं, नहीं। ना हाँ, एग्रीड। वांटेड। हाँ, हाँ। शुभ, शुभ बोलो। हाँ, शुभ। बट बट आई फील कि इवन दो अगर टूल बंद हो गया ना, मेरा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, बट आई नो हाउ टू एडिट। मैं तो वो फ़ोन पे भी कर लूँगा या फिर कोई और टूल पे भी कर लूँगा। तो आई नो स्टोरी टेलिंग, आई नो
क्या चीज कहाँ होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस जब देखे या व्यूअर जब देखे तो उनको क्या फील हो. सो आई अंडरस्टैंड video editing. I understand storytelling. But वही कि so there is a difference between knowing how to edit a video and being a video editor. So इसमें यही है कि तुम cuts लगा के म्यूजिक डाल के वो सब करके you can edit a video, but being a video editor means that you also need to learn how to tell a story, how to push that emotion in viewer, ताकि सामने वाले को उतना ज्यादा इंटेंसिटी फील हो जो भी क्रिएटर बोल रहा है उस वीडियो में. तो आई फील कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट इवन दो प्रीमियर प्रो बंद हो जाए, पर दैट्स फाइन. नहीं, नहीं, ये शुभ-शुभ बोलते होगा, हैं। बस बस. यस. आई हैव हर्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि एडिटर्स के पास तो अंधा पैसा होता है, सो हाउ मच रफली डज़ अ बिगिनर गेट पेड फॉर इट? So if you actually learn the skill and you put in time, so I feel कि you can earn good money from editing. But मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा जल्दी चाहिए रहता है. एंड एडिटिंग इज़ अ स्किल, एंड स्किल तुम इन्फिनिटली बेटर करना चाहो तो नहीं हो सकता है. सो टू कमिंग बैक टू योर सेकंड, लाइक द लेटर हाफ ऑफ योर क्वेश्चन, फॉर अ बिगिनिंग एडिटर, जहां तक मैंने देखा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में, फॉर अ रील editor can charge around 800 to 1000 rupees. For a long form, editor can charge around 2000 to 4 2000 to 4000 rupees. Of course, इसमें अभी बहुत सारी चीजें आ जाती है कि रेफरेंस वीडियो क्या होगा, कितना लंबा होगा वीडियो, कितने दिन चाहिए होंगे टू एडिट द वीडियो, कितना टाइम जाएगा. ऑल ऑफ दैट इज देयर. बट जहां तक मैंने स्टैंडर्ड्स देखे हैं, वेन एवर आई वर्क विद अ बिगिनर एडिटर, so these are the general rates that they get paid off. So, and एक reel भी उनको बनाने के लिए it would take around 2 to 3 hours. So you can say that if you get a client who pays you 1000 rupees per reel and you do it 30 like 30 reels, so it would be around 25 to 30,000. Yeah. चांदी-चांदी हो जाएगी। हाँ, बट वही है कि इट्स अ स्किल. सो डोंट एक्सपेक्ट यू टू लाइक एक्चुअली स्टार्ट राइट नाउ एंड देन एक हफ्ते बाद तुम्हें क्लाइंट मिलेगा ऐसा. सो यू विल एक्चुअली नीड टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट. व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिएटिवली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जिस पे आपने आज तक काम किया है? Creatively challenging project. So I worked on a vlog for Bhuvan Bam. So it was like BB in Dubai. So Bhuvan Bam in Dubai. उसका vlog था. And मैं offline, like I was there with Bhuvan and a few other people to edit, and creatively, like I got to learn so much from it. But then that was something that I did for the first time. So हाँ, मेरे लिए creatively challenging था. It took 4 to 5 days to get that vlog done. अराउंड 5-6 घंटा हम लोग हर रोज बैठते थे. बट या, दैट वाज दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज रिमेम्बर. कोई बात नहीं. काम किया है? हाँ हाँ, आई वर्कड विद Like भुवन मामा that also, was yeah. freelancing or are you So there with him? no, not right now, but he has his own production house, Yeah, BBKB Productions. So I used to work in that productions पहले. okay. Yeah. ताज़ा खबर वगैरह में भी आपने कुछ किया है मतलब एडिटिंग वगैरह? नहीं, so I was in the content side of it. Like जो भी YouTube, Instagram पे जाता था from BBK Productions, तो उस पे होता था. कभी-कभी अगर कोई ब्रांड रील वगैरह आ जाए, तो उस पे like for Bhuvan, I used to work on that पहले. But ये बहुत बड़े स्केल पे होता है. ताज़ा खबर, ढिंढोरा. So हुँ। नहीं, I right now I did not get a chance to work on it.
But yeah, someday I would love to do something like that. Wow, great. So, Yeah. since let's end this conversation. This Mhm. was such a insightful conversation. Got to know so much about video editing. Also, viewers, if you loved this episode, don't forget to subscribe, share, and leave us a review. I'll see you next time and with another inspiring guest. So, that is it for today's video podcast. I mean, Mhm. thank you so much for watching this one, and I'll meet you guys in the next one.